If you remember, we were discussing functions of the commercial banks. Am I right? We were discussing that functions of commercial banks. What is commercial bank? Can you help me to know what is commercial bank? It is said that commercial bank is a financial institution which borrows money from the public in the form of deposits and lends money to the public in the form of loans. लोगों से ही पैसा लेना और लोगों को ही पैसा देना. In between, trying to earn some profit. Such organization would be called as commercial bank. Such organization should be called as commercial bank. वहाँ पे we started discussion of functions of the commercial bank. If you remember, we started discussion of functions of commercial banks. I said they are broadly divided into two types. A, primary functions. A, primary functions. और मैंने वहां पे आपको बताया था प्राइमरी फंक्शंस भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज accepting deposits. Bank accepts deposit from the public. Remember, such deposits will constitute a major source of fund to the commercial bank. That is one of the very important part. I said deposits are accepted by the bank in two different ways. One, we call it as demand deposits. मैंने आपको बताया था demand deposits are such type of deposit in which the depositors can withdraw the money, can demand the money back as and when they require. Just hold on. So demand deposits हमने देखा था. The depositor can demand it back, can withdraw it as and when they require. और डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था. उसमें से फर्स्ट टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था.
ए सेविंग्स अकाउंट, ए सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, और I said that it is an account which is operated by regular income earner. The main objective of this account is to develop habits of saving among the people. Bank pays interest but at a very lower rate. And इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवाया था मैंने आपको, that this account is subject to restrictions on withdrawals. अभी दूसरा इसके अंदर होता है करंट अकाउंट। अभी इस अकाउंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। करंट अकाउंट, इट इज an account which is operated by business people. देखो, सेविंग्स अकाउंट के अंदर हमने जो एक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया था, दैट सेविंग्स अकाउंट के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं विड्रॉवल्स के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ दोज रेस्ट्रिक्शंस आई कैन टेल यू दैट savings account is not suitable. Savings account is not suitable for business activities. It is not suitable for business activities. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, business people open up current account. The main objective of this account is to promote. The main objective of this account is to promote smooth conduct of business activity. देखो, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। If you remember, सेविंग्स अकाउंट का ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग्स अमॉन्ग द पीपल। Habit of savings among the people. But इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। Usually no interest is paid on current account. यूजुअली करंट अकाउंट के ऊपर हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। सॉरी,
सेकेंड फ्लोर पे। करंट अकाउंट के ऊपर यूजुअली कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, सेविंग्स अकाउंट में पे किया जाता है, बट दैट इज पेड एट लोअर रेट। यहाँ पे यूजुअली नहीं पे किया जाता है, यूजुअली पे नहीं किया, यूजुअली वर्ड यूज किया है। मतलब क्या, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन आई से यूजुअली, व्हाट डज दैट मीन? मोस्टली नहीं पे किया जाता, मतलब कुछ ऐसे बैंक हो सकते हैं जो करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करे, वो भी बहुत कम रेट पे, 1.5%, 1% जितना इंटरेस्ट। बट मोस्टली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। देयर आर नो restrictions on current account. You should remember and keep it in mind that there are no restrictions on current account. किसी भी तरह का विड्रॉवल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। You can deposit 1,000 times, you can withdraw lakh times. There are no restrictions on this type of account. This feature of this account makes this account very particular and very, what we can say, comfortable for business activities. Because of this feature, it becomes suitable for business. So ये हो गया अपना demand deposit. Now we go to the next type of deposit by the bank, that is पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। time deposits. These are the deposits in which the depositors can withdraw their money only after stipulated period of time. तो यहाँ पे डिपॉजिटर जो है अपना पैसा विड्रॉ तो कर सकता है, विड्रॉवल इज परमिटेड, बट कब विड्रॉ कर सकता है? इन बिटवीन, जब उसको जरूरत रहेगा तब वो विड्रॉ नहीं करेगा, तब वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। The withdrawals can be made
only after a stipulated period of time. मतलब ये टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो ये टाइम पीरियड जो है वो अकाउंट होल्डर ने अकाउंट ओपन करते वक्त डिसाइड किया रहेगा, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो जितना पीरियड है उस पीरियड तक यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी, यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी। टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद में आप कर सकते हो विड्रॉवल। अभी इसमें दो टाइप के टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। ए, रिकरिंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा? रिकरिंग का मतलब बताओ मुझको। रिपीटिंग और अगेन, अकरिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग और अकरिंग अगेन एंड अगेन। तो आई कैन से under this deposit, the depositor will deposit a fixed amount at a fixed interval for a fixed duration of time. Under this deposit, it said the depositor will deposit a fixed amount, let us say 5,000, at a fixed interval, that is per month, 5,000 per month, fixed amount, fixed interval for fixed duration, for fixed duration. Now fixed duration, say for 3 years. तो मैंने 5,000 per month deposit किया, I will deposit it up to 3 years. So that would be 60,000 per year, 1,80,000 for 3 years. I will deposit it into the account. On maturity, bank will pay principal amount with interest. On maturity, bank will pay principal amount with interest. मतलब जब भी ये 3 साल कंप्लीट हो गया तो 1,80,000 प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे। On maturity, bank will pay principal amount plus interest. Interest paid on this account is higher than savings account.
इस अकाउंट पे हमको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, the interest paid on this account is higher, अराउंड 6% के आसपास इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है. इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट इज हाइयर. सो ये हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट. Now, last type of deposit we take up, B, fixed deposits. Fixed deposits. Under this deposit, the depositor will deposit a fixed lump sum amount for a fixed duration of time. अभी इस डिपॉजिट में देखो क्या बोला है, the depositor will deposit a fixed lump sum amount. यहाँ पे बार बार पैसा डिपॉजिट नहीं होगा. The depositor will deposit a fixed lump sum amount. एक lump sum amount रहेगा, say 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 50,000. एक lump sum amount जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा for a fixed duration of time, say 2 years. So 1 lakh deposited for 2 years. तो वो सेम है. On maturity, bank will pay principal amount with interest. On the maturity date, the bank will pay principal amount with the interest. Bank will make payment of principal amount as well as interest amount at the time of maturity. That is at the time when the deposit ends.